Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yusuf. Today we are going to talk about a very important topic, that is the movement of the eyeball, and maybe a few more topics. Probably this may be our last lecture in the physiology of vision. But before that, one ayah from Holy Quran, an ayah from Surah Al-Baqarah, ayat number 155. Probably this is very commonly, I usually start with this ayah in many lectures. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم हम जरूर बिजरूर तुमको आजमाएंगे बिशई मिनल खौफ कुछ खौफ देकर वलजू और भूख देकर व नक्स मिनल अमवाल और माल में कमी करके वल अनफुसे और अनफुस में जानों में कमी करके व समरात और समरात में प्रोडक्ट्स में फलों में कमी करके या कोई भी प्रोडक्ट्स में कमी करके व बशर साबरीन जो इन आजमाइशों पे सब्र करने वाले होंगे उनके लिए खुशखबरी है। तो ये अल्लाह पाक जोर देकर कहेंगे वाला नबलवन्नकुम, हम जरूर बेजरूर ये आजमाइशें मोमनों के लिए जरूर डालेंगे। तो अल्लाह पाक फिर इन पर सब्र करने वालों के लिए अल्लाह के लिए खुशखबरी अगली आयतों में वही आयत आ जाती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तर्जमा देख लें, हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, माल जान और फलों की कमी से, और सब्र करने इन आजमाइशों में सब्र करने वालों पर को खुशखबरी है। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। तो वी टॉक अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द आईबॉल. Movements is we can move our eye voluntarily, one, and there are reflex movement of the eyeball as well. दोनों किस्म के बाद देयर इज रिफ्लेक्स मूवमेंट एज वेल एज द वॉलंटरी मूवमेंट. जैसे स्केलेटल मसल में देयर इज वॉलंटरी एक्शन एंड देयर आर इनवॉलंटरी रिफ्लेक्सेस एज वेल. तो यहाँ पे भी देयर आर रिफ्लेक्स मूवमेंट एज वेल एज द वॉलंटरी मूवमेंट. तो वॉलंटरी मूवमेंट के लिए देयर आर वॉलंटरी मसल्स इन्वॉल्व. तो देयर आर 6 एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स. सोमैटिक नर्व सप्लाई वॉलंटरी के लिए तो सोमैटिक नर्व सप्लाई होती है. जो हम अभी तक मसल सिलियरी मसल और आयरस के मसल की बात की थी, दे आर स्मूथ मसल, दे आर सप्लाइड बाय द विसरल नर्व्स, oculomotor nerve and sympathetic parasympathetic nerve we were talking about. They are visceral nerve. Now for this movement of the eyeball, skeletal muscles are there. These are the extraocular muscles. There are 6 muscles. And these are 3 pairs of the muscle, हम कह सकते हैं. There are 6 muscles naming medial rectus, lateral rectus, superior rectus and inferior rectus. So there are 4 recti. So medial and lateral, superior and inferior. And there are 2 oblique muscles, that is superior oblique then inferior oblique. So these are 6 muscles. Their nerve supply भी हम देख लेंगे. Extraocular muscles functions they pair. There are pairs of muscles. मिसाल के तौर पर when I am turning my eyes to left, मैं टर्न कर रहा हूँ लेफ्ट को, you can imagine there will be a lateral rectus which will be pulling the eyeball, my left eyeball to the left side, and at the same time there is pulling of the right eye to opposite side, nasal side. Yeah, this eye is moving towards the temporal side, the opposite eye is moving in this side, and of course lateral rectus of this eye will be pulling it, medial rectus of this eye will be relaxed. So they are acting in pairs. एक आई में भी पेयर है. medial rectus जब contract, lateral rectus is contracting, medial rectus of this left eye must relax, इसको उधर मूव करने के लिए, और opposite eye पे opposite काम हो रहा है. lateral rectus of this eye is contracting and medial rectus of the opposite eye is also going. So there is reciprocal innervation of both the eyes. So these functions in pairs, lateral and medial recti side to side movement के लिए ये काम करते हैं. ये अभी हम देखें side to side movement के लिए lateral and medial recti हैं, और उनकी innervation, reciprocal innervation थोड़ी मैंने डिटेल में थोड़ी सी बात कर दी है. And the superior and inferior recti, they are responsible for the upward movement of the eye. That is when my both eyes are moving upward, both superior recti are pulling, दोनों recti लगे हुए, they are pulling the eyeball upward.
और उसमें वी शुड कीप इन माइंड लोअर रेक्ट आई मस्ट रिलैक्स, दोनों आंखों के। तो अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, बोथ अपर रेक्टाई दे विल बी, सुपीरियर रेक्टाई दे विल बी पुलिंग बोथ the eyeball simultaneously, and both the lower recti will be relaxing simultaneously. When the eyeballs are moving downward, opposite will happen. The inferior recti will be, both will be contracting, both eyes, or superior recti will be relaxing. Or oblique muscles, superior and inferior oblique, are responsible for the rotational movement of the eyeball. उनके भी आपस में the arrangement is, that's one is contracting, the other one is relaxing. So they act in pairs, but more important is this reciprocal innervation, कि जब ये इस आंख की innervation है, दूसरी आंख पे भी reciprocal contraction or relaxation of the some muscle must take place. So that ये किस लिए? We know that there are special areas in the retina which will be fused by the brain. अगर एक आंख उधर ही पड़ी रहे, उसमें इमेज कोई और बन रहा हो, तो दूसरी आंख उधर, तो image in both eyes will be in that area which the brain is able to fuse them. तो इनको ऐसे मूवमेंट करना चाहिए दोनों आंखों को कि इमेज, ब्रेन इज एबल टू फ्यूज द टू इमेजेस, जिसको हम कहते हैं कंजुगेट मूवमेंट ऑफ द आईबॉल, इसको कंजुगेट मूवमेंट होनी चाहिए. Now, innervation of these 6 muscles, these are known as extraocular muscles. इनको 6 muscle को extraocular muscle कहते हैं. They are skeletal muscles. So the voluntary muscles. So lateral rectus is supplied by the one nerve, that is lateral rectus. Lateral rectus of the right eye, lateral rectus of the left eye. Right abducent nerve will be supplying to the right eye, lateral rectus or left abducent nerve. So it is the abducent nerve which is supplying this. And superior oblique is supplied by the trochlear nerve, 4th nerve. Abducent nerve is 6th nerve, वो लिखा हुआ है. That is the 6th nerve, abducent nerve, 6th cranial nerve is supplying lateral rectus. And the superior oblique एक muscle रह गया. Superior oblique is supplied by one nerve, that is the trochlear nerve, 4th nerve. बस इतना याद रखने कि ये दो nerves इन दो special muscle के लिए हैं. Lateral rectus is supplied by the abducent nerve, and the superior oblique is supplied by the 4th nerve or the trochlear nerve. Rest of the muscles, medial rectus, superior rectus, कौन से रह गए हैं? यही रह गए ना. medial lateral के मुकाबले में ये medial rectus रह गया, superior oblique and superior rectus भी रहता है, inferior rectus भी रहता है, and inferior oblique भी रहता है. So these muscles, these 4 muscles, they are supplied by oculomotor nerve. Oculomotor nerve का somatic nerve, not the parasympathetic. Oculomotor nerve में विसरल नर्व के फाइबर भी मौजूद है. वो दे आर कमिंग फ्रॉम द एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, उसका जिक्र अभी आएगा. विसरल नर्व, द पैरासिम्पैथेटिक नर्व, उसका न्यूक्लियस अलग है, दैट इज द एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस. लेकिन सोमैटिक न्यूक्लियस भी इसका मौजूद है. एंड so somatic fibers in the oculomotor nerve, the 3rd cranial nerve, this contains the somatic nerve which is supplying these. और वो reciprocal arrangement है कि एक oculomotor nerve किसको सप्लाई, lateral rectus को सप्लाई कर रही है, द सेम आपस में इनर्वेशन है, दूसरी उसको इनहिबिट कर रही हो. तो इसको, so this is the oculomotor nerve, 3rd is supplying. Muscles nuclei are interconnected by the medial longitudinal fasciculus. This point you must, it should be very clear. All these nuclei, these are the 3 nerves. All these 3 nuclei are interconnected. इनका आपस में reciprocal arrangement के लिए there must be some interconnection between them. कि एक lateral rectus अगर contract कर रहा है तो medial rectus should relax. अगर उनको लेटर, तो दे आर इंटरकनेक्टेड वाया मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस. वो बंडल ऑफ फाइबर आगे डायग्राम में आ जाएगा. दैट बंडल ऑफ फाइबर इज नोन एज मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, एंड दिस मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस इज आल्सो कनेक्टिंग दीज न्यूक्लियाई टू दी वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई. ये कौन से हैं? वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, 8th क्रेनियल नर्व का वेस्टिबुलर पार्ट वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई के साथ भी कनेक्टेड है, बल्कि ब्रेन स्टेम में नीचे जाके स्पाइनल कार्ड के साथ भी कुछ कनेक्शन दिस मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस का है. तो ये इंपॉर्टेंट वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, यानी orientation of my head will must be conducted to eyes.
मैं देख रहा हूँ एक इमेज को. If I turn my head like this, I turn my head upward, I should move to keep the image in focus. मैं देख रहा हूँ जिस चीज को, that should be kept in the foveal region में. तो I am turning my head upward, so I should move downward. So this is through this vestibular movement of the head is detected by the vestibular nuclei, जो semicircular canal, जो probably अगर आपने पढ़ा हुआ है that sensory system. So this is detected by the vestibular apparatus. And vestibular nuclei are responsible for the detection of this movement of the head, and this information is conveyed to these oculomotor nuclei. तीनों के oculomotor nuclei जब मैं बोल रहा हूँ, तो I mean all the three nerves responsible for the oculomotion. Oculomotion के लिए इसका oculomotor nerve सिर्फ नहीं, oculomotor nuclei means all the three. तीनों को. अदरवाइज oculomotor nerve बोलेंगे तो थर्ड cranial nerve है. So all these three nerves responsible for the oculomotion. अब ठीक है, ज्यादा बेहतर ये है. All the three nerves which are responsible for the oculomotion, ocular movement of the eyeball, both they are being informed from the vestibular nuclei through medial longitudinal fasciculus, and the eye movement is adjusted accordingly. हेड की मूवमेंट के साथ साथ. So the reciprocal innervation of the pairs, यही जो बात है, medial longitudinal fasciculus is then sending information कि इसका साइड का superior rectus is contracting, opposite side का भी contract करना चाहिए, दोनों को इकट्ठे contract करना चाहिए. So reciprocal innervation of the pairs of the muscle is there through this diagram. These are the three nuclei. Oculomotor nuclei are the nuclei responsible for oculomotion. Otherwise, oculomotor nerve तो सिर्फ एक third cranial nerve है. So this sixth nerve is supplying the lateral rectus, and the fourth nerve. Fourth nerve is supplying the superior oblique. कहाँ पे है? This is superior oblique. Yes, this is oblique muscle crossing through the, क्या कहते हैं, ट्रोक्लिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं. So this is passing through trochlear nerve भी इसलिए बोलते हैं. So this is the abducens nerve which is supplying the lateral rectus को supply कर रही है, and the third nerve is supplying rest of the muscle, सारे muscle को ये supply कर रही है, third nerve. And this is all these, now they are supplying these respective muscle, अपने muscle को supply कर रही है, but they are interconnected by the medial longitudinal fasciculus. You can say, see, this is medial longitudinal fasciculus. This is also connected to the eighth nerve, जो नीचे nuclei है medulla में, आपको पता है eighth nerve is in the medulla, उसके nuclei vestibular. eighth nerve के साथ भी connected है, और फिर brain step नीचे भी जाके spinal nerve के साथ, maybe turning of the head and head, turning of the body to the flash of light. ये आपने पहले कहीं बात की हुई है. That is through this. That is medial. Scene के मुताबिक body का response, body का reflex response. So this medial longitudinal fasciculus is involved to receive the information for the vestibular nuclei, or send the information to the other areas of the brain as well. So these muscles are responsible for the movement of these eyeballs. आगे हम जरा और देखेंगे. Fixation movement का क्या मतलब? I am looking at a scene. I am turning my eyes to another scene, and my eyes are focused on another object of attention. This camera is visible to me, but more sharply visible is that area. कुछ और, and now this camera is sharply visible to me, rest of the area is visible to me, but the eyes have turned to this area, and image of this object is in my macular region, foveal region, maximum visual acuity के लिए. So eyes are fixed on the object of attention, and eyes have to be moved from the object attention to focus, to fix on another object जब हमने eyes को move करनी है. So there are two parts. One is when I am looking at this image should be kept focused, fixed in the foveal region. एक part तो ये है. And one part is I will turn this, I will unlock my eyes. This is locking. My eyes should be locked on the object of attention.
लॉक्ड है ना, मैंने हेड ऊपर किया है, आंखें खुद ब खुद नीचे आ गई हैं। ये जो अभी वेस्टिबुलर अपरेटस का कुछ बात कर रहे थे, तो रिफ्लेक्सली मैं खुद नीचे नहीं ला रहा हूं आंखों को, आई एम टर्निंग माई हेड अपवर्ड, आईज आर मूविंग डाउनवर्ड, through the vestibular apparatus information is being conveyed to these oculomotor सिस्टम बोलते हैं ज्यादा, oculomotor सिस्टम को, ये तीनों जो नर्व्स हैं, oculomotor सिस्टम को ये सिग्नल देंगी, एंड आईज आर मूविंग, और जब मैं अप कर रहा हूं डाउन कर रहा हूं, आईज आर मूविंग, तो दे हैव टू बी फिक्स्ड एंड दे हैव टू बी रिमूव्ड अगर दूसरी जगह पे देखना है। So there are two mechanisms. One is voluntary. Voluntary is unlocking. आइस को एक जगह से अनलॉक करके दूसरी तरफ ले जा, दिस इज वॉलंटरी, एंड दी चीज को ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन टू कीप इट इन दी फोवियर रीजन, मैक्सिमम विजुअल एक्यूटी वाले रीजन पे रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए, दैट इज इनवॉलंटरी। तो देयर आर वॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म, यानी अनलॉकिंग मैकेनिज्म जो अभी मैंने बोला है, दिस इज वॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म। मूवमेंट टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, मैं देख रहा हूं, अभी मैंने फोकस नहीं किया कि क्या ढूंढ रहा हूं, दैट इज आई एम लुकिंग एट दिस कैमरा, ओ ये कैमरा ढूंढ रहा था। सो दिस मूवमेंट ऑफ द आई बॉल जो मैं कर रहा हूं, दिस इज मूवमेंट टू फाइंड द ऑब्जेक्ट, अनलॉकिंग मैकेनिज्म है। अभी ये अनलॉक कर, एक जगह से पहले फोकस था, अब मैं ढूंढ रहा हूं तो फोकस हो गया, तो दिस विल बी लॉक्ड। So movement to find the object, this is known as unlocking. Unlocking क्यों कहते हैं कि जिस चीज को हमने फोकस किया हुआ है, that is locked, उससे हटा के फिर आइज को हम मूव करेंगे, दैट इज अनलॉकिंग। अनलॉकिंग और वो सारी मूवमेंट रखने के लिए, दैट इज द वॉलंटरी मैकेनिज्म। मैं आंखों को हर तरफ लेके जा रहा हूं, दिस इज वॉलंटरी मैकेनिज्म। जब एक चीज मिल गई अटेंशन के लिए, तो कीप इट इन द आई, दैट इज इनवॉलंटरी। वो इनवॉलंटरी आगे देखेंगे इनवॉलंटरी में होता क्या है। तो movement to find the object, and this which is known as unlocking mechanism, this is voluntary movement, voluntary movement, and the voluntary fixation movement इसको बोलेंगे। responsible, this movement के लिए responsible is frontal cortex, premotor cortex in the frontal lobe, frontal cortex, motor lobe के primary motor cortex से भी आगे। So premotor cortex is responsible for the in the frontal lobe में, जो frontal eye field भी उसको बोलते हैं, frontal lobe में there is premotor cortex responsible for this unlocking mechanism, voluntary fixation mechanism to movement of the eye from the उसको unlock करके बाकी जगहों पे लेके जाने के लिए movement। Voluntary fixation area is this premotor cortex in the frontal lobe। फ्रंटल कॉर्टिकल आई फील्ड्स, इसको ये भी कहते हैं कॉर्टेक्स में है, और आई के मूवमेंट के लिए जो वॉलंटरी फिक्सेशन एरिया, इसलिए दिस एरिया इज आल्सो नोन एज फ्रंटल कॉर्टिकल आई फील्ड्स। एंड बाइलेटरल डिस्ट्रक्शन, अगर ये फ्रंटल लोब के ये वाले एरिया, फ्रंटल आई फील्ड जिनको बोलते हैं फ्रंटल कॉर्टिकल आई फील्ड्स या प्रीमोटर कॉर्टेक्स, इफ दिस एरिया इज डिस्ट्रॉयड द पर्सन कैन नॉट अनलॉक। So bilateral destruction, inability to unlock, आंखों को वहां से हटा, आंखें ब्लिंक करेगा तो हट जाएंगी, ब्लिंक करना और काम है, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ द oculomotor system। ब्लिंक करना तो और काम है ना, ऑर्बिकुलर आकुलाई और समथिंग, दो बाकी मसल्स हैं, फेस के मसल्स, आपने यू मस्ट हैव स्टडीड। तो दैट इज, तो लॉक रखने के लिए अनलॉक नहीं करेंगे जब तक आंखें उसकी मूवमेंट है, बिकॉज दिस एरिया हैज बीन डिस्ट्रॉयड व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द वॉलंटरीली अनलॉकिंग मैकेनिज्म, ये नहीं है। तो अनलॉक करने के लिए द पर्सन हैज टू ब्लिंक, वो ब्लिंक करेगा तो नेचुरली वो फिर अनलॉक हो गई है वहां से। सो द बाइलेटरल डिस्ट्रक्शन लीड्स टू इनएबिलिटी टू अनलॉक एंड द फ्रंटोटेक्टल ट्रैक्ट। अच्छा, ये इसको, ये कहां पे मौजूद है वॉलंटरी फिक्सेशन एरिया? इन द फ्रंटल लोब्स। फ्रंटल लोब में इंफॉर्मेशन कहां लेके जानी है फ्रंटल लोब से? इन दो थ्री न्यूक्लियाई ऑक्यूलोमोटर सिस्टम में लेके जानी है। तो वो कौन सा ट्रैक्ट होगा विच विल बी टेकिंग, दैट इज नोन एज द फ्रंटोटेक्टल ट्रैक्ट। फ्रंटल कॉर्टेक्स से टेक्टम को जो जा रहा है, दैट इज, उसमें वो न्यूक्लियाई मौजूद है, वहां पे टेक्टम के करीब मौजूद है, प्री टेक्टम। तो फ्रंटोटेक्टल ट्रैक्ट इज रिस्पांसिबल फॉर द पाथवे फॉर दिस वॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म। फ्रंटल कॉर्टेक्स से उनको वॉलंटरी सिग्नल कहां से जा रहे हैं, दिस इज द फ्रंटोटेक्टल ट्रैक्ट। आगे डायग्राम में भी आ जाएगा।
So this is voluntary fixation mechanism. और इनवॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म आ जाएगा. इनवॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म वो क्या? द आईज आर केप्ट लॉक्ड. जो मैं कह रहा हूं कि अगर ये एरिया डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो मैकेनिज्म वो लॉक ही रहेगा. Voluntary fixation mechanism, movement to keep the object in focus. हाँ, लिखा हुआ क्या है? देखो गौर करें, ये लिखा हुआ सेंटेंस क्या है? To keep the object in focus, ये तो समझ आती है. Movements. There are movements to keep the object in motion, in focus. उसको फोकस रखने के लिए ये मूवमेंट को छोड़ दे. कीप द ऑब्जेक्ट इन फोकस, ये तो पहले मैंने एक्सप्लेन किया. ये जो नजर आ रहा है, दिस शुड बी इन द फोवियर रीजन. इसको फोवियर रीजन में रखने के लिए देयर आर सम मूवमेंट्स. वो 3 किस्म की मूवमेंट है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. देयर आर मूवमेंट्स व्हिच कीप द ऑब्जेक्ट इन द फोवियर रीजन. देयर आर सो मूवमेंट. उन मूवमेंट को इनवॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट कहते हैं. वो होती रहती हैं. दे आर इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल से बाहर हैं. इसको देख रहा हूं तो देयर आर मूवमेंट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कीपिंग द इमेज इन द फोवियर रीजन. फोवियर जहां पे हमने फिक्स रखना चाहते हैं, जिसको कहते हैं लॉकिंग. सो दीज मूवमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉकिंग द आईज इन द फोवियर रीजन. सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स इन द ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स. ये जो एसोसिएशन कॉर्टेक्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए एरिया 18, 19, 20. तो सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स से सिग्नल आते हैं. ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से, ऑक्सीपिटल लोब से सिग्नल कम टू द ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियाई, टू द टेक्टम. ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियाई को आने के लिए सिग्नल फ्रॉम दी दिस विजुअल एरिया से आएंगे. कौन से? सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स से आएंगे. लेटरल लोकेटेड एंटीरियर टू दी प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स. प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से आगे कौन सा एरिया? एरिया 18 ही आता है. एंटीरियर टू दैट, और फिर 19 भी आ जाता है. दैट इज प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से एंटीरियरली ऑक्सीपिटल लोब में जो एरिया 18, 19 है, वहां से सिग्नल आते हैं फॉर दिस मूवमेंट. ये मूवमेंट, अभी मूवमेंट हमने डिस्क्राइब नहीं की. मूवमेंट वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब फॉर दिस फिक्सेशन मूवमेंट. देयर आर 3 मूवमेंट्स. And the fibers which are bringing this information for this control are occipitocortical eye fields. इनको बोलेंगे वो एरिया, एसोसिएशन कॉर्टेक्स, ऑक्सीपिटोकॉर्टिकल आई फील्ड्स. डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस एरिया, ये जो एसोसिएशन कॉर्टेक्स है, अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दो, द इनएबिलिटी टू कीप द आई डायरेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. अगर ये एरिया डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये फिक्स नहीं रहती, खुद ही हट जाएगा. उसको लाने के लिए फिर मुश्किल से उसको दोबारा लाएंगे. वैसे तो हमने इसको इमेज में रखा हुआ. आई एम मूविंग, माई हेड इज मूविंग, बट दिस इमेज ऑफ दिस कैमरा इज स्टिल इन माई दैट. जो या जिस चीज को मैं देख रहा हूं, दे आर, मैं जितना भी मूव कर रहा हूं, इनवॉलंटरी दिस इज केप्ट इन द फोवियर रीजन. अगर ये एरिया डिस्ट्रॉय हो जाए, देन दिस इज कैन नॉट बी केप्ट इन द फोवियर रीजन विद द मूवमेंट. And this is control is achieved by the occipitocollicular and occipitotactal fibers. मैं वापस जा रहा हूं, वापस लिए जा रहा हूं कि वो फिक्सेशन मूवमेंट के लिए फ्रंटोटेक्टल ट्रैक्ट, यहां से फ्रंटल लोब से टेक्टम तक जो ट्रैक्ट जा रहा था, दैट इज फ्रंटोटेक्टल ट्रैक्ट. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म, वॉलंटरी मूवमेंट के लिए, अनलॉकिंग मैकेनिज्म के लिए. और ये जो अभी हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स से इसका कंट्रोल है, एसोसिएशन कॉर्टेक्स से इसका कंट्रोल है, ऑक्सीपिटल लोब से फाइबर्स आएंगे. एंड देयर आर 2 ट्रैक्ट्स, that is the occipitocollicular and occipitotactal. Occipitocolliculus में जा रहे हैं और टेक्टम में जा रहे हैं. They are responsible for that. आखिरी बात क्या लिखो है? A negative feedback mechanism prevents the object of attention from leaving the foveal region. ये इनवॉलंटरी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है यहां से, टू कीप द ऑब्जेक्ट इन द फोवियर रीजन, टू कीप इट लॉक्ड इन द फोवियर रीजन. उसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं. ये वो डायग्राम है. दैट इज द वॉलंटरी फिक्सेशन एरिया इन द प्री मोटर कॉर्टेक्स. या मोटर कॉर्टेक्स है, प्री मोटर कॉर्टेक्स में फ्रंटल लोब में द वॉलंटरी फिक्सेशन एरिया, unlocking mechanism. This is the frontotactal tract bringing this information to the tectum. This is these 3 nuclei of the these 3 nuclei. ये 3 nuclei हैं, they are interconnected. Third nerve का ये है, fourth nerve का ये है, seventh nerve का ये है, and the vestibular nerve भी यहाँ पे नजर आ रहा है. Medial longitudinal fasciculus भी नजर आ रहा है जो पिछली स्लाइड में. This is good diagram.
That is, all the three nuclei, they are interconnected by the medial longitudinal fasciculus, and the spectrum say information, and colliculus say that the occipitotactal, occipitocollicular fiber जो लो आ रहे हैं, they are two tracts which are coming to the occipitotactal, occipitocollicular tract, and they are controlling this oculomotor system. Teen nerves ka oculomotor system, they are being controlled. Involuntary fixation area to keep the eye focus on the object of attention, and voluntary fixation area to unlock it and find the object of attention, usko phir dobara focuses. So that is how. So medial longitudinal fasciculus in sare kaamon mein involve ho raha hai, and medial longitudinal fasciculus vestibular nuclei ke baad it is also going in the brainstem. मेडुला से भी नीचे जा रहा है, एंड इट इज इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी एज वेल. वो काम भी कर सकता है, टर्निंग ऑफ द हेड भी पूरी हो सकती है. तो दैट इज हाउ दीज आर इनर्वेटेड. तो वॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म और इनवॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म उसको हम देखते हैं. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द involuntary fixation movements, जिसपे object of attention is kept in the fovea region. There are movements, there are three types of the movement, three types of the fixation movement जिनके कहते हैं. The eyes are fixed on the object, जो involuntary mechanism है. There are three types of the movements. One is continuous tremor. This is eye. ये मेरी center of my palm, say it is macula, this is fovea, whatever, and this is focused here. एक image is focused here. There is tremor. Eyeball is trembling, involuntary. We don't feel it. We don't have control over it. ये involuntary. It is tremoring. There is tremor. तो समझते हैं ना? Alternate contraction, relaxation of the some muscles. So there are tremors in the. That is continuous tremor. That is frequency is 30 to 80 per second. Per second, 30 to 80 movements per second. There is tremor and image tremors on the different photoreceptor. You can see this is tremoring, so image is moving. अब मैं हाथ को मूव नहीं करता, जैसे इमेज को इसको मूव कर रहा हूँ, तो इमेज इज मूविंग ऑन दी फोवियल रीजन, फोवियल कोन. ये सिर्फ खड़ा नहीं है कि उसी जगह पे फोकस नहीं है. दिस इज ट्रेमलिंग अराउंड सम ऑफ दी कोन. सो देयर इज द इमेज ट्रेमर्स. इमेज भी ट्रेमर कर रहा है बिकॉज ऑफ द ट्रेमर ऑफ द आई बाल ट्रेमर कर रहा है, तो इमेज इज मूविंग इन डिफरेंट फोटो रिसेप्टर्स. ये एक मूवमेंट है. एक और मूवमेंट आई में हर वक्त मौजूद है, विच इज स्लो ड्रिफ्ट. स्लो ड्रिफ्ट का क्या मतलब है? टू वन साइड और अदर. ये दिस इज मूविंग टू दी वन साइड and then it will be reverse back. वो अगली मूवमेंट है. स्लो मूविंग ऑन वन साइड एंड इट विल बी रिवर्स बैक. वो अगली सडन फ्लिक उसको कहते हैं. तो स्लोली इट इज ट्रेमर भी कर रहा है और स्लोली ड्रिफ्ट कर रहा है इन वन डायरेक्शन और अदर डायरेक्शन. किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है. इफ इट इज गोइंग इन द लेफ्ट साइड, फर्ज कर रहा हूँ यहाँ पे मेरे हाथ की मूवमेंट, इट इज गोइंग ऑन दिस, ट्रेमर भी कर रहा है एंड इट इज स्लोली ड्रिफ्टिंग टू द अदर साइड. तो क्या होगा? ट्रेमर करने से द इमेज विल बी मूविंग इन द सेम फोवियर रीजन कुछ कोण पर, लेकिन अगर एक साइड पे ड्रिफ्ट कर रहा है इट विल कम आउट एट द मैकुलर रीजन से, फोविया से बाहर आ जाएगा अगर ये ज्यादा दूसरी तरफ मूव कर गया. व्हेन जब ये बाहर आएगा इट विल बी आउट ऑफ फोकस, विजुअल एक्यूटी विल नॉट बी शार्प, इट विल बी ब्रॉट बैक अगेन इन द अपोजिट डायरेक्शन. That is the third movement, जो sudden flick है. So the to one side, slow drifted to one side or the other till the image reaches the edge of the fovea. Image edge of the fovea पे आएगा. अगर इधर जा रहा है तो इसको वापस sudden flick होगा. अगर ऊपर जा रहा है sudden flick downward होगा. So the sudden flick will occur third move. अगर fovea के margin पे आ गया, it will be brought back again to the central fovea region because of the sudden flick. So the opposite to the slow drift. Slow drift जिधर margin तक ले गया, this will bring back to these. So continuous tremor, slow drift and sudden flick. These are the three movements which are involuntarily being performed by the occipitotactal tract, and occipitocollicular tract is affecting the oculomotor system. These three nerves उनको कर रहे हैं. and the ये सारे movement of the eyeball के लिए तो यही muscles involved है ना, all these 6 muscles, तो वो move कर रहे हैं. So this is opposite to the slow drift to bring the image back in the fovea region. इन 3 से these are the involuntary fixation movements which are being controlled by the occipital cortex, association cortex, and the information is brought via. उसका काम है sharpness, visual acuity देखने का काम इसी का है.
उसका काम है, अगर आउट ऑफ फोकस होगा तो दिस विल बी एनालाइज बाय द कॉर्टेक्स, एसोसिएशन कॉर्टेक्स इसको एनालाइज करेगा, इट हैज गॉन आउट ऑफ फोवियर रीजन, इट हैज गॉन, इट इज आउट ऑफ फोकस हो गया, तो दिस इज द एनालिसिस ऑफ द विजुअल कॉर्टेक्स एंड इट विल करेक्ट दिस। वो करेक्ट कैसे करेगा? बाय दीज थ्री टाइप्स ऑफ द मूवमेंट, थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट इनवॉलंटरी टेकिंग प्लेस। सो दीज मैकेनिज्म्स आर लॉस्ट इन इफ द सुपीरियर कॉलिकुलस इज डिस्ट्रॉयड। वो हमने कहा दैट इज ऑक्सीपिटो कॉलिकुलर ट्रैक्ट हमने बोला हुआ है। तो अगर सुपीरियर कॉलिकुलस डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये मैकेनिज्म टू मूवमेंट टू फिक्सेशन मूवमेंट का इनवॉलंटरी फिक्सेशन खराब हो जाती है। ये वो डायग्राम है फ्रॉम योर गाइटन एंड हॉल, दैट इज कंटिन्यूअस ट्रेमर, तो यहाँ पे दिखाई हुई नहीं है, लेकिन स्लो ड्रिफ्ट इज शोन हियर, दैट इज इट इज फॉर एग्जांपल दिस इज ड्रिफ्टिंग, दिस इज ड्रिफ्टिंग, मार्जिन पे जब आएगी इट विल बी ब्रॉट बैक टू अगेन स्लो ड्रिफ्ट, दिस इज स्लो ड्रिफ्ट। अगर ये आस्ता आस्ता चलते चलते मार्जिन ऑफ द फोविया पे आ गई, इट विल बी ब्रॉट बैक अगेन टू द फोविया रीजन। सो स्लो ड्रिफ्ट टू वन साइड एंड सडन फ्लिक टू अपोजिट साइड, ये दो काम है। उसको स्लो ड्रिफ्ट एक साइड पे उसको फोविया से निकालने की हो जाएगी तो वापस आ जाएगा, दीज आर इनवॉलंटरी, और कंटिन्यूअस ट्रेमर इज आल्सो टेकिंग प्लेस। So these are the three types of movements which are involved for the these are called as fixation movements of the now conjugate movement of the eyeball, मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था, both eyes should move to keep the image in areas which can be properly fused by the brain. both eyes उस तरह मूव करेंगे, दैट इज अपवर्ड जाएंगे दोनों इकट्ठे जाएंगे, डाउनवर्ड आएंगे दोनों इकट्ठे आएंगे, तो वन आई इज ड्रिफ्टिंग टू राइट साइड, द अदर विल बी ऑन द मीडियल साइड, वो मीडियल साइड पे, so this is the conjugate movement of the eye will be taking place. Now उससे पहले we will explain some ये voluntary fixation and involuntary fixation का जो mechanism we have discussed it, that is discussed it. One type of movement we should explain to understand this voluntary fixation mechanism or involuntary fixation mechanism. One type of movement which we can call them as saccadic movement. Jumping, saccade, jump को कहते हैं saccade. Saccadic movements, that is fast eye movements to place the object on the fovea or to move the eyes from one object to another object up to 800 images per second. क्या मतलब है? When I am moving, I am driving, I am reading, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, one word is focused, then the next, then the next, then the next. तो क्या मतलब है? One word is focus, then I will unlock my eyes and the next word will be locked, then the next word will be, it will be unlocked and next word be unlocked. Or when I am moving, one frame is focused, then I will unlock my eyes, which is voluntary mechanism, unlock my eyes and I will focus the next frame, and then I am driving, the eyes are being jumping from one frame to next frame. Or when I'm reading a book, the eyes are jumping from one word or one line to next line. The jumping of the eyes. तो इनमें दोनों mechanism है. While in the voluntary mechanism of unlocking and the keep the object locked, that is the involuntary movement, वही movement दोनों जो हम पीछे पढ़ के आएंगे, they are involved in these saccades. इन सेकेंड के लिए, तो जंप के लिए, the eyes are jumping from frame to frame, word to word, or when I am looking at and painting, आपकी किताब में शायद डायग्राम ये सेंटेंस लिखा हुआ है, when you are looking at the painting, एक चीज देखिए, then दूसरी देखिए, तीसरी देखिए, so you are locking the eyes on the object of attention and you are moving the eye from that object, unlocking mechanism to focus the next object. These are known as saccades. So fast eye movement to place the object on the fovea, to move the eyes from one object to another object, and this may be as fast as 800 images per second. इतनी तेजी से this can be jumping can 800 seconds आप बोल सकते हैं, 10 seconds, 20 seconds, 800 seconds, इतनी तेजी से eyes they can jump. Then ये saccadic movements हैं, these are known as the saccadic movement. Then another type of movement, ये वो भी, उसमें भी यही चीज involved है, pursuit movements. What are those? Slow eye movement to maintain the fixation on the moving object.
मेरे सामने एक पेंडुलम मूव कर रहा है, पेंडुलम मूवमेंट। शुरू में तो आई माई आई, अगर उसको मैंने पेंडुलम को, इफ दिस इज मूविंग लाइक दिस, इफ दिस ऑब्जेक्ट हैज टू बी केप्ट इन माई फोवियर रीजन, इसको मैंने देखना है। दिस इज मूविंग अप डाउन डाउन और किसी तरह से मूविंग ऑब्जेक्ट पर अगर रखना है तो माई आई शुड मूव अकॉर्डिंगली, इसके मुताबिक मूव करेंगी दोनों आईज इसको फोबिया में रखने के लिए। दोनों आईज इसके मुताबिक, पेंडुलम की एग्जांपल मैंने दी है। पेंडुलम को अगर मेरी आईज में फोकस रखना है, बोथ आईज में फोकस रखना है, तो बोथ आईज शुड बी मूविंग अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। These are known as pursuit movements. ये भी वही होगा। The object has to be kept in the foveal region. I have to be jumping from one place to another place. So these a slow eye movement to maintain the fixation on the moving object. ये बहुत तेजी से नहीं हो सकता, एक खास फ्रीक्वेंसी तक हम फोकस कर सकते हैं, उससे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो दिस इज आउट ऑफ फोकस। आपने देखे ज्यादा तेजी से अगर कोई मूव कर रहा है, वी कांट सी दैट ऑब्जेक्ट, उसको जैसे एक इमेज सा नजर आता है, वी कांट सी। आपका ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कर, कैन यू सी दोस वाइब्रेटर्स? वो ये स्लो वाली, स्लो मूविंग पेंडुलम की, घड़ी का पेंडुलम मिसाल के तौर पर, यू कैन फोकस, वो आपको नजर आ रहा होता है। नॉन ऑप्टिकल रिफ्लेक्सेस, ये जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, दैट इज मूवमेंट ऑफ द आई बॉल इन्वॉल्विंग नॉन ऑप्टिकल रीजन्स, वेस्टिबुलर रीजन्स, वेस्टिबुलर रीजन इन्वॉल्व। ये हमने एग्जांपल दी हुई है मैंने। मूवमेंट ऑफ द हेड विल कॉज मूवमेंट ऑफ द आई बॉल। ये तो अभी तक तो हमने फिक्सेशन मूवमेंट और आइडेंटिटी फिक्सेशन आई बॉल की उनकी बात की थी ने, लेकिन ये इंफॉर्मेशन के हेड की मूवमेंट के साथ आई मूव, आई हैव टू मूव, उन्होंने मूव करना है। तो आर वेस्टिबुलर रिफ्लेक्सेस व्हिच मेंटेन आई पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एनी चेंज इन द हेड एंड बॉडी पोजीशन। ये नॉन ऑप्टिकल रिफ्लेक्सेस है इन्वॉल्व, उसमें भी वही दोनों चीजें हैं, वॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म, इनवॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म। तो हेड की मूवमेंट को जब मैंने हेड को ऊपर किया है तो मस्ट बी सम मैकेनिज्म कि वेस्टिबुलर apparatus सेंड द सिग्नल टू कीप द आई, उसको आई को मूव करके फोबिया में इमेज रखना है। एंड दी बॉडी के साथ भी, सिर्फ हेड की मूवमेंट नहीं, मैंने बॉडी को भी मूव किया है, बॉडी को मूव किया है, तो आई द इमेज इज केप्ट इन द फोकस रीजन और फोबियर रीजन। दीज आर द ऑप्टिको, दीज आर नोन एज नॉन ऑप्टिकल रिफ्लेक्सेस। तो फिक्सेशन मूवमेंट में ये तीनों, इन सारी किस्म की मूवमेंट्स में दो वॉलंटरी फिक्सेशन एंड इनवॉलंटरी फिक्सेशन मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व। opticokinetic movements, saccadic movements are the explanation उनकी। These are the opticokinetic movements, jumping of eye from one object, one frame or one word, one scene to another scene, जो मैं explain कर चुका हूँ, उसी की आगे लिखी हुई explanation आ गई है। That is the driving, walking, saccades from frame to frame, reading, reading भी लिखा होना चाहिए, driving, walking, reading, or looking and painting, painting को analyze कर रहे हैं। So these are eyes are jumping from one object to another object. So saccadic movement इसको कहते हैं। Reading saccades from the word to word. Yes, it is written here. आगे। So the scanning of a painting, all that. These are the saccades and the, yes is important. इसमें दोनों किस्म की मूवमेंट है, वॉलंटरी अनलॉकिंग मैकेनिज्म भी है और लॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ इनवॉलंटरी भी है। 10% टाइम इज कंज्यूम्ड इन अनलॉकिंग। आप देखें ना, ये वी आर रनिंग क्वाइट फास्ट, आप फास्ट मूव कर रहे हैं, आपको कभी फील नहीं होता कि ऑब्जेक्ट इज इन आउट ऑफ फोकस, कभी नहीं होता। आप जंप कर रहे हैं, आईज आर जंपिंग सो फास्ट फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम, यू नेवर सी, आपको आउट ऑफ फोकस कभी नहीं, बिकॉज दिस इज ओनली 10% टाइम इज कंज्यूम इन अनलॉकिंग। एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम तक जंप करने में टोटल टाइम 10% कंज्यूम होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फोकस। इसलिए आप इतनी तेजी से ड्राइव करते हुए भी पूरी सड़क आपको फोकस में रहती है, हालांकि योर आईज आर जंपिंग फ्रॉम फ्रेम टू फ्रेम, जंप कर रहे होते हैं। तो 10% टाइम इज कंज्यूम इन अनलॉकिंग वॉलंटरी मैकेनिज्म में, और 90% टाइम इज टू कीप द इमेज। वो जो 3 फिक्सेशन मूवमेंट हमने पढ़ी हैं, इनवॉलंटरी फिक्सेशन मूवमेंट, उस वजह से। सो दैट इज हाउ द saccadic मूवमेंट टेक प्लेस। ब्रेन सप्रेसेस द इमेज बिटवीन, इन बिटवीन। ये अनलॉकिंग में कोई बनना हो, अनलॉक किया मैंने आई को, अगले फ्रेम में आने तक जो इमेज बनता है, ब्रेन सप्रेसेस दैट।
superior colliculus is involved in this. हमने ये अभी देखा था. Responsible for the Y ganglion cells send one branch to cortex and one to the superior colliculus. Very quick information जो चाहिए हमें Y type ganglion थे, अभी हमने डिस्कस किया था. मैग्नोसेलुलर से आने वाले वो लेयर नंबर 4 में वो सी बीटा में पहुंचने वाले जो लेयर थे Y type ganglion सेल, उसका होता कैसे? वो Y type ganglion cells send one branch to the cortex and one branch to the superior colliculus. हमने we had discussed the some of the fibers leaving the optic tract, and instead of going to medial geniculate, lateral geniculate nucleus, some fibers are going to superior colliculus. Here that is explanation. Y type ganglion cells के दो किस्म के fibers होते हैं. एक ganglion cell के one fiber is going to वो दो में संबंध गया. One is going to the superior colliculus, that is it is leaving the lateral वो क्या कहते हैं optic tract, and it is going to the superior colliculus. The other is going to that area. So one ganglion cell, so W type ganglion cell also transmit the signal to the superior colliculus. इसके भी W type से भी कुछ signal देको the superior colliculus, and control of the conjugate movement इस वजह से. Very quickly, information is conveyed to the superior colliculus. This superior colliculus adjusts the movement of the eyeball according to the requirement. जैसे हमने कहा, medial rectus, lateral rectus of left eye contract कर रहा है, तो medial rectus of the other eye should contract. Or lateral rectus, medial rectus of the other side should relax. Same side should relax. This is how the information is conveyed through superior colliculus to these oculomotor system. Control of the movement of the head, ये भी उसी तरह control होगा. According the information will be conveyed to the control of the movement of the whole body. ये superior colliculus के जरिए eye movement is being controlled, and through medial longitudinal fasciculus. This information through medial longitudinal fasciculus इसको superior colliculus को पहुंच रही है, and it is adjusting the stimulation of these three nuclei to control the conjugate movement of the eyeball. Movement of the eyes even if the visual cortex has been destroyed. ये क्या मतलब हुआ? Visual cortex is responsible for the conscious vision. Consciously जो नजर आ रहा है, that is involved primary visual cortex उसके लिए चाहिए. If some accident causes destruction of the primary visual cortex, person will not be able to see. The person will be blind. Conscious vision will not be there. The person cannot see. Visual cortex na ho, the person cannot see. But this movement may be present. Person cannot see, but the eyes will move by this mechanism. Movement of the eye will be there. You must have seen that some people, blind people, they can move their eyes. When they are moving the head upward, nothing is visible. But the movement of the head ke saath, there is movement of the eyeballs as well. So these movements are movement of the eye even if the visual cortex has been destroyed. This is through the superior colliculus. Superior colliculus अगर ठीक है तो eyes can move if a person is not even he is blind due to only destruction of the primary visual cortex. Signal तो आएंगे ना. For this movement of the eye, superior colliculus को medial longitudinal fasciculus से भी signal जा रहे हैं, and the occipito-collicular tract से भी signal आ रहे हैं जो हमने पिछली diagram में देखा हुआ है. So for this purpose, the superior colliculus must be intact. Primary visual cortex conscious vision के लिए necessary है. So that's how the movement of the eyeball हमने डिस्कस किया. ये लेक्चर लंबा हो रहा है लेकिन we have to finish. थोड़ा सा रह गया तो we want to try to finish it. आई मूवमेंट में ये तो हमने आई मूवमेंट एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल के ये कॉन्जुगेट मूवमेंट के हमने डिस्कस कर लिया. आईज की सप्लाई ये तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की भी सप्लाई है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक की उसकी बात करते हैं. देन भी फिर उसमें इंपॉर्टेंट एक दो बातें हैं विच वी हैव टू डिस्कस. फॉर एग्जांपल पिपुलरी लाइट रिफ्लेक्स वेरी इंपॉर्टेंट जो हमने डिस्कस करना है. So autonomic nerves through the eye, we know the parasympathetic preganglionic neurons are preganglionic fibers are present in the oculomotor nerve. और वो उसका न्यूक्लियस कौन सा है? दैट न्यूक्लियस इज द पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस जिसका नाम हमने रखा हुआ है द एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस. एडिंगर वेस्पाल, दैट इज एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस इज
autonomic or the parasympathetic nucleus of the oculomotor nerve. Fibers in the oculomotor nerve, they go the oculomotor nerve. फिर उनकी सप्लाई भी देख लें. At Dinger Westphal nucleus से preganglionic neuron will be brought up. You know the autonomic nervous system is two neuronal system. Preganglionic neuron, they are present in the Dinger Westphal nucleus. Then the fiber will be passed on into the this optic nerve, somatic nerve के साथ ये भी मिल जाएंगे. So of the parasympathetic fiber will be passed on in this. So the Dinger Westphal, so the fiber in the oculomotor nerve, they are present. Then they will leave this oculomotor nerve and they will be there is a second ganglion, second neuron, जो post ganglionic neuron is present in the ciliary ganglion. Behind this eyeball के पीछे there is ciliary ganglion, जिसको हम कहते हैं ciliary ganglion, contain the post ganglionic neuron. वहां से दूसरी nerve निकलेगी, which is short ciliary nerve. This short ciliary nerve will be supplying the ciliary muscle as well as the those constrictor pupillary muscle. So it will be supplying this will be supply the ciliary muscle for accommodation. We have discussed its accommodation. Parasympathetic nerve, oculomotor nerve हमने पढ़ी हुई है. So accommodation यहाँ से control होगी. And the sphincter pupillary muscle, जो pupillary light reflex आज हम discuss करने जा रहे हैं. Constrictor pupillary को constrictor, तो circularly arranged muscles in the iris, उसको supply करने की. Then parasympathetic nerve तो preganglionic neurons are present in the T1 to L2 और इसके लिए T1 2 वाले हैं. The sympathetic ganglion neurons in the intermediolateral horn of the first spinal segment T1 में मौजूद हैं. And synapse in the superior cervical ganglion of the sympathetic chain. Sympathetic chain का सबसे ऊपर वाला जो ganglion है, उसमें ये second order neuron, the post ganglionic neuron will be present. वहाँ synapse करेंगे. And post ganglionic fiber pass along the carotid artery and its branches. आर्टरी के साथ साथ ये फाइबर जाएंगे. They will leave the वो जो superior cervical ganglion को parasympathetic post ganglionic fiber will be along the optic the carotid nerve की branches के साथ they will reach the eye के साथ आएंगे and they will be they supply the dilator pupillary. Parasympathetic supply the constrictor pupillary and they supply the radial muscles or the dilator pupillary. You arrange radially arrange in the iris, the dilatation of the pupil के लिए. So the smooth muscles embedded in the upper eyelid, ये भी है. Parasympathetic supply is also to the some smooth muscle in the upper eyelid. Upper eyelid में भी ये मौजूद है. And ciliary muscle को भी supply है. Not very important, but it is supplied by the ciliary muscle. ये वो fibers है. This is Edinger Westphal nucleus. Edinger Westphal nucleus से third nerve में जाए fiber. हम parasympathetic fiber की बात कर रहे हैं. They will form synapse in the ciliary ganglion. Second, this is short ciliary nerve supplying the ciliary muscle as well as the constrictor pupillary. And the जो sympathetic fibers हैं thoracic segment में the superior cervical ganglion में ये आ रहे हैं, spinal segment से आ रहे हैं. They are forming synapse here. The fibers along the artery branches, they are going to the ciliary muscles or the dilated pupillary muscles. एक और pathway. This is the pretectal region. Pretectal region से signals are coming to the Edinger Westphal nucleus. इसको याद रखें. Edinger Westphal nucleus से pretectal region को information कहाँ से आ रही है? What is this? Is the second nerve. इसकी तरफ हम आ रहे हैं. Second nerve से information is also coming to the pretectal region. ये हमने बात की थी when we were talking about the visual cortex, जो पिछला ही lecture था. पिछला नहीं, उससे पिछला lecture. Pathway visual का जो हमने when we were talking about the visual pathway की बात की थी. Fibers leaving the optic tract and going to the pretectal region responsible for the pupillary light reflex. Those are the fibers. ये optic nerve के fibers और तो नहीं pathway दिखाया. The fibers leaving the optic tract and going to the pretectal region and they are affecting the Edinger Westphal nucleus and this will cause the constriction of the pupil. ये जो pupillary light reflex अभी हम explain करने जा रहे हैं. This is the pathway. आगे pathway आ जाएगा. यहाँ पे मैंने diagram दिखा दिया. Describe हम आगे करेंगे. Pupillary light reflex आ गया. What is that? When we show the light into the people constrict.
This is known as pupillary light reflex, or simply light reflex भी इसको कहते हैं, लेकिन पूरा नाम इसका pupillary light reflex है. Light shown in one eye causes constriction of the pupil. इसको कहते हैं pupillary light reflex. Reflex arc, yani every reflex has got arc, receptor, then the sensory nerve, then the central nervous system का part, then the motor nerve, then the effector. ये वो components हैं reflexes के. Every reflex has got these 5 components. So the reflex arc कैसे है? Retina में photoreceptor मौजूद है. Sensory nerve is the optic nerve, and this goes the pretectal region, optic nerve के fiber leaving the optic tract and going to the pretectal region, जो diagram में अभी मैंने explain किया है. And this is the pretectal region, central आ गया, and this pretectal region is connected to the Edinger-Westphal nucleus. मैंने diagram में दिखाया था. It is connected, it is affecting the this Edinger-Westphal nucleus, and Edinger-Westphal nucleus से parasympathetic fiber, they are passed on to the oculomotor nerve. Oculomotor nerve से there is short ciliary ganglion, and from the ciliary ganglion, short ciliary nerve, which is supplying the effector, that is the constrictor pupillary muscle. हम देखा pupillary light reflex की बात, accommodation की अभी बात नहीं कर रहे. Pupillary light same is supplied to the ciliary muscle as well. So the short ciliary nerve, sphincter pupillary, that is how a light shown into the eye will cause the stimulation of retina, optic nerve, and signal will go to the pretectal region, and from there Westphal nucleus it will be stimulated. It will cause the oculomotor nerve fiber will go to the ciliary ganglion, and finally the constrictor pupillary will be stimulated, and it will cause the constriction of the pupil, and this is known as pupillary light reflex. Then there is another type of the pupillary light reflex. Light is shown in left eye, there will be constriction of the opposite eye as well. एक आंख में दिखाई है उसकी तो हमने एक्सप्लेन कर दिया. There will be constriction of the pupil on the same side, but there is constriction of the pupil on the opposite side as well. Opposite side पे क्यों है? You can imagine, crossing over है. Crossing over is at the optic chiasma as well. इस आंख के signals are going to the opposite sides of the pretectal region as well. Optic chiasma पे ये fiber cross तो कर रहे हैं. There is a crossing in the optic chiasma. वहां पे भी क्रॉसिंग है, and there is the mixing at the pretectal region as well, and there is a mixing at the Edinger-Westphal nucleus as well. वहां पे भी क्रॉसिंग है from one side to other side. So उसकी वजह से opposite side का जो pupillary constriction होती है, that is known as consensual light reflex, constriction of the opposite eye, pupil of the opposite eye. So this is light reflex, इसका pathway, and optic chiasma पे crossing है, and some fiber from the pretectal region they cross to the opposite side. और कुछ लोग कहते हैं कि Edinger-Westphal nucleus भी दोनों साइड के आपस में कुछ इंटरकनेक्शन है उसकी. ये वो पाथवे दोबारा आ गया. That is pupillary light reflex. यहाँ से लाइट सिग्नल आ रहे होंगे थ्रू, they reach the pretectal region, and Edinger-Westphal nucleus को और थर्ड नर्व सप्लाई होगी, parasympathetic nerve, और short ciliary nerve will be supplying the constrictor pupillary. That is how pupillary light reflex will occur. And opposite eye का वो optic chiasma की crossing, या there is connection of this pretectal region to the opposite side pretectal region को भी जाता है. So this is diagram taken from somewhere from Google. That is this is the normal, say this is people, this is constricted pupil, and that is dilated pupil, responsible for the control of the movement of the eyeball. ये तो abnormal pupillary reflexes. Abnormal reflexes जरा सी बात करके खत्म कर रहे हैं, 2-3 स्लाइडें रह गई. Damage in the pretectal region क्या होगा? That is CNS syphilis मिसाल के तौर पर, alcoholism और encephalitis. तो pretectal region पे डैमेज हो गया तो pupillary light reflex खराब हो जाएगा. तो damage to the pretectal region उसी में इन्वॉल्व है कि वजह जो भी हो, syphilis हो या encephalitis हो या alcoholism हो या physical destruction हो, किसी वजह से भी हो. So the destruction of that region chronically, what will happen? उस साइड पे pupil is chronically constricted. उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि normal impulses from this to the pretectum to the Edinger-Westphal nucleus, they are inhibitory to the Edinger-Westphal nucleus.
तो जब वो इनहिबिटरी सिग्नल नहीं होंगे, pupil will remain constricted. So chronically constricted pupil will be there if there is damage to the pretectal region. प्रीटेक्टर रीजन से इनहिबिटरी सिग्नल जाते हैं एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस को, तो वो इनहिबिटरी सिग्नल नहीं होंगे तो एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस विल बी कॉन्स्टेंटली फायरिंग एंड इट विल कॉज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल, क्रॉनिकली कंस्ट्रिक्टेड पीपल. लाइट रिफ्लेक्स विल बी एब्सेंट नेचुरली, देयर इज नो कनेक्शन, वो है ही नहीं कि वो और कोई सिग्नल प्रीटेक्टर रीजन से आए टू कॉज मोर स्टिमुलेशन ऑफ दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड accommodation reflex may be present here. Accommodation reflex may be present here. क्यों? This light reflex constriction of the pupil is being controlled by this pretectal region जो खराब हो गया, तो light reflex will be absent. Accommodation reflex में जो constriction of the pupil होती है, that is Edinger Westphal nucleus is stimulated, उसका pathway ये नहीं है, it is not the tectal region. That is from this occipital cortex as the signals are coming to there. So accommodation reflex may be present in that. इसका control इसके जरिए से नहीं है. So that is present. इस किस्म के pupil को is known, जिसमें light reflex is absent, that the pupil does not constrict if the light is thrown into the eye, pupil does not constrict. But when the person looks at the nearer objects, we had talked about this constriction of pupil when we were talking about the accommodation का mechanism में I refer to this, that is accommodation reflex. क्या होता है? This is the constriction of the pupil when the person looks at the nearer objects. दूर देखते हुए people are dilated, नजदीक देखते हुए people constrict. So this is accommodation reflex. This is present. इसका control occipital cord, occipitotactal, occipitocaricular fibers are responsible for this. तो उसके लिए this is accommodation reflex may be present, but light reflex will be absent. इस किस्म का people which responds does not respond to light, but when the person looks at the nearer objects, it constricts. Its response is there. So this is known as Argyll-Robertson pupil. ये एक pupil आप आई में पढ़ेंगे डिटेल में. उसका रीजन ऐसे है कि जैसे दी accommodation reflex का पाथवे वो है और this light reflex का पाथवे ये. Failing to respond to constrict to light and but responding, that is constriction to accommodation. This is Argyll-Robertson pupil. अब ये आखिरी स्लाइड आ गई है, that is Horner syndrome. ये एक एबनॉर्मेलिटी है, सिंपैथेटिक सिस्टम की एबनॉर्मेलिटी. सिंपैथेटिक सप्लाई ऑफ वन साइड ऑफ द फेस और वन साइड इज गॉन. एक साइड का सिंपैथेटिक चेन में कोई गड़बड़ हो गई है, उसमें सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन में गड़बड़ हो गई. द सिंपैथेटिक सप्लाई टू वन साइड ऑफ द फेस इंक्लूडिंग आई इज गॉन. तो उसमें जो चार चीजें होती हैं, that is sympathetic supply to one side of the face is gone. वो one side का superior cervical ganglion destroy हो गया किसी वजह से, the sympathetic fibers नहीं आ रहे. One side of the face में क्या include है? That is this includes the this smooth muscles embedded in the upper eyelid, the ciliary muscles, and the dilated pupillary muscle and the blood vessels को सप्लाई तो सिंपैथेटिक की होती है ना, तो इन चारों जगहों पे इफेक्ट होगा. एब्सेंस ऑफ द सिंपैथेटिक फाइबर. सो द इंटरप्शन ऑफ द सिंपैथेटिक सप्लाई फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन टू वन साइड ऑफ द फेस ना हो तो क्या होता है? देयर आर फोर थिंग. कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल. क्यों? Parasympathetic supply is responsible for dilatation. कुछ dilatation, sympathetic tone इसको भी कुछ ना कुछ है ना. Some dilatation, constriction, dilatation is kept by this. जब ये नहीं होगी, constricted pupil, so constricted pupil will be there. Pupil will be constricted. Loss of sympathetic, वे तो pupillary dilatation करती है, वो खत्म हो जाएगी. There will be some constriction of the pupil. Constricted pupil because of absence of sympathetic. Ptosis means upper eyelid will be drooping. वैसे तो मैं सीधा देख रहा हूँ भाई, बहुत ही eyelids are upward, दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इसमें one side का लॉस है. one eyelid will be ptosis, एक eyelid नीचे की तरफ है. that is the drooping of the upper eyelid, उस साइड का, जिस साइड का है, क्योंकि उस मसल की सप्लाई is gone. smooth muscle embedded in the upper eyelid वो काम नहीं कर रहा होगा, तो some drooping of the eyelid will be there. दूसरा काम. तीसरा काम वेजोडाइलेटेशन.
because the sympathetic nerves are vasoconstrictors. जब ये नहीं होंगी sympathetic vasomotor tone will be gone. उनकी जो sympathetic tone है वो नहीं होगी, so vasodilatation, redness on that side, and absence of sweating. Sweat glands are supplied throughout the body by the sympathetics. Sympathetics are responsible for sweating. तो parasympathetic supply नहीं होगी तो sweating भी नहीं होगी इस साइड पे, एक साइड उस साइड. तो ये चार चीजें होंगी, एंड इन चारों चीजों को मिलाकर we term as Horner syndrome. Loss of sympathetic supply to one side of the face. एक superior cervical ganglion किसी साइड का डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये चार बातें होती हैं उस साइड पे. Absence of sweating, vasodilatation, drooping of the eyelid, ptosis जिसको कहते हैं ptosis. This is ptosis. The ptosis, drooping of the eyelid, and constricted pupil. दूसरे के मुकाबले में. So this is known as Horner syndrome. With that we end this physiology of eye. हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं. These 11 lectures, I think these are 11 lecture हो गए हैं. So if you have got some problem, most welcome. जब भी आप question करें, you can ask questions. आप question कर लें. Next time इंशाल्लाह ताला जब भी हम maybe कंटिन्यूस कर लेंगे, अगला लेक्चर हम इस में सेंस ऑफ हियरिंग इंशाल्लाह शुरू करेंगे, और इसको शेयर भी कर दें, बाकी लोगों को बता भी दें इंशाल्लाह. अगर आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और बता भी दें कि इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेंस ऑफ हियरिंग इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू. होप टू सी यू इन नेक्स्ट टाइम.